हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज संजय राठी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्मिट ट्रिगर सर्किट में से एक टॉपिक हम लोग निकालेंगे, व्हाट हिस्टेरिसिस कर्व गाइस। तो ये है आज का टॉपिक जो मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, श्मिट ट्रिगर सर्किट। ओके, अब आज हम लोगों का टॉपिक है श्मिट ट्रिगर का ट्रांसफर कर्व कैसे बनता है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट हिस्टेरिसिस कर्व। राइट, दिस इज द टॉपिक। इसका मतलब है आपको अगर ये टॉपिक समझना है हिस्टेरिसिस कर्व, तो आप मेरे साथ बने रहिए। दो इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें से 95% और हम बोल भी सकते हैं कि मोर देन 95% क्वेश्चन जो श्मिट ट्रिगर पर बनते हैं ये दो डायग्राम से ही आएंगे। तो गेट द कमांड ओवर दीज टू डायग्राम गाइज एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो दैट साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, एवरीथिंग इज फाइन। यस प्लीज, यस प्लीज। ओके देन। तो अब दीपावली भी आने वाली है भाई, अपना शेड्यूल सेट कर लीजिएगा। ईच एंड एवरी डे आपको यूज करना है, साथ में आपको फेस्टिवल भी एंजॉय करना है। लेकिन याद रखिएगा इस बार IRMS दैट इज इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस भी है थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। गेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और इस बार आपको अच्छी रैंक लेकर आनी है दोनों एग्जाम्स में। तो अपना शेड्यूल सेट कर लीजिए, कैसे आप दीपावली मनाओगे, ईच एंड एवरी डे कैसे इफेक्टिवली यूज करोगे। राइट, तो ध्यान दीजिएगा। नाउ गाइज एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज संजय राठी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट हिस्टेरिसिस कर्व। ये एक पार्ट है जब हम ट्रांसफर कर्व बनाते हैं श्मिट ट्रिगर सर्किट का, तो उसमें एक कर्व आता है दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस कर्व के ऊपर क्वेश्चन आता है हिस्टेरिसिस वोल्टेज कि पर्टिकुलर सर्किट का हिस्टेरिसिस वोल्टेज कितना है। दो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक में इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा है और एक पर इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा हुआ है। ये देखिए वो डायग्राम है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। यहां आप देखो जरा, इस पॉइंट पर आपको दिखाई देगा जो इनपुट है कहां लगा हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। ये तो जो हिस्टेरिसिस जो लूप आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो सर्कल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में। अगर आपको आइडिया है तो जरूर कमेंट्स में लिखिए कि क्लॉकवाइज में आएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में जो सर्कल बनेगा। राइट, जो आपका लूप बनेगा। देन ये एक हो गया जिस पर आपने इनपुट किस पे लगाया है, नेगेटिव टर्मिनल पर। और यहां देखो आपको दिखाई दे रहा है देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक, देयर इज पॉजिटिव फीडबैक। देन सेकेंड जो डायग्राम है वो ये है, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखिए जरा, पॉजिटिव फीडबैक ही है, जो आउटपुट का कनेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से है, लेकिन इनपुट भी किस पर दिया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये इनपुट है। राइट, तो यहां पर ये आपको दिख रहा होगा हिस्टेरिसिस लूप हियर। तो दो डायग्राम हो गए, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इन्हीं दो डायग्राम पर बेस्ड होते हैं। श्मिट ट्रिगर सर्किट पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं दो डायग्राम्स पर आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई बार बार क्वेश्चंस बनाने की बजाय बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आप इन पर क्या कर लीजिए, इन दो डायग्राम पर ही कमांड कर लीजिए। ओके, तो चलिए अपने सभी दोस्तों को बोल दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा लिंक, देन चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और राइट, अभी बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सर कोई ऐसा कोर्स आएगा जो हमको गेट 2025 या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2025 में हेल्प करेगा। ये जितने भी सेशंस आ रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो कि कैसे क्या होता है, टॉपिक कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राइट, चल अब आते हैं। दिस इज माई इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ संजय राठी। दीज आर माई रैंक्स इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम गाइस। ओके, अब जब हम लोग दे रहे थे तो ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, यूट्यूब तो अवेलेबल ही नहीं थे, बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी। राइट, 2005, 4, 5, 6, 7, तो उस समय तो कोई कंटेंट इतना सिस्टमैटिक ढंग से अवेलेबल नहीं था। फिर भी सेल्फ स्टडी के थ्रू हमने इन एग्जाम्स को क्रैक किया और उस समय कट ऑफ भी अच्छा खासा ही जाता था। सीट्स इतनी ही आती थी, बीच में कभी बढ़ती है कभी घटती है। लेकिन अगर आपको बनना है तो आप एक बार डिसाइड कीजिए कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो आप निकाल लेंगे। और लास्ट 4 साल से आप देखिए 2019 से लेकर 2024 तक आपको कट ऑफ देखोगे कि कट ऑफ काफी नीचे आ गया।
तो ये आपको मोटिवेट करेगा, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। और गेट में भी जो एक मिथ है ना कि यार नंबर नहीं आते, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, अगर प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करेंगे तो इन एग्जाम्स में भी आप टॉप करेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि आप किनको फॉलो कर रहे, राइट, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। देन देखो ये जैसे आप इसको पढ़ेंगे, ये इस सेशन को अटेंड करेंगे, दैट इज व्हाट हिस्टेरिसिस। अगर आपको बेसिक समझना है श्मिट ट्रिगर सर्किट का तो आप ये सेशन जरूर कीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, आप जाइए वहां दिखेगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट रिवीजन सीरीज श्मिट ट्रिगर। यहां मैंने बताया था श्मिट ट्रिगर सर्किट इज अ बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इट इज अ प्रैक्टिकल कंपैरेटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट स्क्वायरिंग सर्किट, क्योंकि जो भी आप वेव फॉर्म दोगे इट विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट स्क्वायर वेव। तो ये है इंपॉर्टेंट अबाउट दिस श्मिट ट्रिगर, तो ये आप जरूर देखिएगा। देन ये है टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा आप इसे। देन अब आप इंतजार कीजिए, एट द एंड आई विल डिस्कस which courses are available on this platform. Courses are available in Hindi means what? English. हिंदी में हम बात करते हैं लेकिन कंटेंट तो इंग्लिश में ही है, और कंप्लीटली इन इंग्लिश ऑल्सो। जिसको इंग्लिश में समझना है, यस दे कैन ज्वाइन, राइट। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स, व्हाट कंप्लीट सिलेबस ऑफ सुपर 5 मीन्स 5 सब्जेक्ट्स इन व्हाट इंग्लिश, तो यू कैन ज्वाइन। नाउ अब आते हैं जरा हिस्टेरिसिस लूप के बारे में, देखें क्या क्या है। फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आपको इनपुट दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ये एक इनपुट है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पर हम लोग एक और क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, उससे पहले आज इस डायग्राम को हम पूरा समझ लें। राइट, देखिएगा, फिर देखिए क्वेश्चन कितनी तेजी से आपसे बनेगा। पहले आप बेसिक समझ लो, उसके बाद नो normally we are having the VR here, this is the R1, this is the R2 and this is connected here V0, and we are giving input at inverting terminal. This is operational amplifier, here we are giving the positive feedback, and it is a standard or basic circuit of what Schmitt trigger circuit. This is the reference voltage, R1 and R2 are the resistance. There is a positive feedback, and because of the positive feedback, always remember there will be only 2 outputs. What are the outputs? First, this is called positive terminal voltage, this is called negative terminal voltage. If the positive terminal voltage is greater than negative terminal voltage, then output will be plus Vset, and if the positive terminal voltage is less than the negative terminal voltage, output is minus Vset. So there are 2 levels, so one is plus Vset and one is minus Vset. Okay, only 2 levels. Means operational amplifier is always in what? Saturation. It may be plus Vset or it may be minus Vset, and that is because of what? Feedback, positive feedback. Now then second thing, what is the current enter into the operational amplifier? 0. Why? Because the input resistance is infinite, so that current enter into this is 0. Now guys, you can find the voltage at this point, and this is the plus Vset and minus Vset is the supply voltage. Plus Vset and minus Vset is the supply voltage. Then if the output is plus Vset, then what is the voltage at this point? What is the voltage at this point? So you can apply the KCL at this point and you can find. So you will get the general answer Vp, right? You can directly write Vp minus V0 upon R1. This is the KCL. Vp minus V0 upon R1, Vp minus VR upon R2. In normal language, we are saying that nodal analysis, so Vp minus VR upon R2 is equal to 0. Arrange this equation and you will get
Vp is equal to R2 upon R1 plus R2 into V naught plus VR into R1 upon R1 plus R2. This is called general equation, guys. So this is the first thing important. Then second, if you find any difficulty in the equation, then you can say, sir, equation number 1, I have some problem. Equation number 2 or equation number 3. So this is the equation number 3. This is called general equation. General equation means voltage at this point in terms of what V0 and what VR. VR is called reference voltage. And what is the current entered here? 0. And that's why this plus this is equal to what? 0. Then this voltage is what? Vp. Now V0 has the two level. One is called plus Vset and one is what? Minus Vset. If the V0 is plus Vset, what is the value of the Vp? Then this will become R2 upon R1 plus R2 Vset plus R1 VR upon R1 plus R2. Easy, right? This is the plus Vset. And if suppose the V0 is minus Vset, then this will become minus of R2 upon R1 plus R2 into Vset plus R1 VR upon R1 plus R2. Okay. So these are the two levels. These are the two levels, one in terms of Vset and one in terms of minus Vset. My dear friend, this is the higher value. Why? Because this is plus, and this is plus, and that is minus. So this has the higher value, this has the lower value, and that is called upper threshold, and this is called lower threshold. So first question will be on what? Upper threshold and lower threshold. So this is the upper threshold and that is the lower threshold. Finished. These two formula are important, right? This is called upper threshold and that is called what? Lower threshold. So I can change the name here, VUTH, and this is VLTH. Lower threshold and upper threshold. Okay. Now the difference of these two, if suppose you are going to find the difference of these two, that is called what? Hysteresis voltage, VH. VH is nothing but difference of the upper threshold and lower threshold. So upper threshold minus lower threshold. So when we are subtracting, this is cancel out because this is common term and we have to add these two. When we are adding, so what is the hysteresis voltage for this particular diagram, guys? Hysteresis voltage for this diagram will become VH, upper threshold minus lower threshold. This is the general formula. So when we are subtracting, you will get 2 times of R2 upon R1 plus R2 into Vset. Supply voltage. This is the value. This is the important formula. But first of all, you have to find the upper threshold and what? Lower threshold, guys. Easy? But remember one precaution. What is the precaution? Sir, directly can we use this formula? My dear friend, we can use this when the plus Vset and minus Vset are magnitude are equal. For example, it is given 15 and minus 15. Then okay, you can use this formula. But sometimes it is given 15, it is given what? Minus 3. Then you can't use this formula. Because plus 15 means you will get this upper threshold. Minus 3 means you have to change this. So my dear friends, in that case, first of all, check this, whether the magnitude are same or different. If the magnitude are different, then first find the upper threshold, then find the lower threshold, and then find the difference of these two. So normally students are making silly mistakes. And that's why I am saying that watch my session carefully. जो भी जनरल गलती होती है ना, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ताकि आप एग्जाम हॉल में गलती ना करें. यही है एक्सपीरियंस. तो आप ऐसी गलती करोगे फिर क्वेश्चन गलत हो गया. तो हिस्टेरेसिस का जनरल फॉर्मूला ये याद रखिए. ये तब वैलिड है जब दोनों साइड वोल्टेज क्या है? सेम है, जो 90% केस में होता है. लेकिन भाई 10% में तो चेंज हो सकता है. ओके, अब आगे जरा ये वैल्यू. देन
Now second thing, once you have the upper threshold and lower threshold, this is what Schmitt trigger circuit. It will convert a square wave into what? It will convert sinusoidal waveform into a square wave. Watch this. Watch this diagram. Right? This is a sinusoidal waveform. Now, if we are having the upper threshold level and lower threshold level, let this is the upper threshold level, let this is the lower threshold level. Right? I am giving you the very simple technique how to recall this formula and so on. Very basic thing about this. This is the sinusoidal waveform is given. This is the upper threshold level. This is the lower threshold level. Right? Now, one is positive, one is negative. Now, very simple. At this point, initially you can assume any output. It may be plus V set or it may be minus V set. You can, normally we are starting with the plus V set, okay, no problem. You can also start with the minus V set, because always remember, output is always a what? Sorry. Now, if it is plus V set, remember, if you are going to start with the plus V set, output is like plus V set initially. If it is plus V set, then already we have the value Vp. When the output is plus V set, means the value is what? Upper threshold. So means it is at upper threshold. For example, the upper threshold level is 3 and lower threshold level is minus 3. So exactly if it is the plus V set, so what is the voltage at this point? 3 and 3, right? And that is the input. Now initially what is the input? 0. Watch this. It is the input is what? 0. Now the positive terminal voltage is greater than negative terminal. Positive terminal voltage is greater than negative terminal, and that's why the output is maintained at plus V set. Output is maintained at plus V set. Now we are increasing the input, means inverting terminal increases. When it increases up to 3 volt or slightly greater than 3 volt, output will switch from plus V set to minus V set. This is the first point. This is the first point. When the input crosses the 3 volt, that is called upper threshold, output will switch from plus V set to minus V set. Right? And this is the minus V set. Then output is minus V set. Now, if this is minus V set, according to the formula, what about the Vp? Vp will become what? Lower threshold. So Vp will switch from upper threshold to directly lower threshold. But what is the input? Sinusoidal. It will first cross the 3. It will remain at 3. Now it will reach up to what? Maximum value. For example, the maximum value is 5 volt. 5 sin omega t. So it will reach up to 5 volt. So 5 volt is greater than what? Minus 3. And that's why output will remain at minus V set. Negative terminal voltage is greater than positive terminal. Again, when we are decreasing the input, first of all, it will cross the upper threshold, no change. Then when it will cross the lower threshold, right, then what will happen? Right, then when it will cross the lower threshold, minus 3, the negative terminal will become less than the positive terminal, and positive is greater than negative, and that's why the output will switch from minus V set to plus V set. Minus V set to plus V set. Now, once the output switch from minus V set to plus V set, it is also switched from minus 3 to what? Again plus 3. Again plus 3. Now this plus 3 is greater than what? Minus 3. And that's why output is maintained at what? Plus V set. This plus 3 is greater than the value of the input. Positive terminal is greater than the negative, and that's why output is maintained at plus V set. Now the input will goes up to what? Minus 5.
because it is a 5 sin omega t. Negative terminal is less than positive terminal. Again the input will increase. First of all it will cross lower threshold, no change. When it will cross again upper threshold, there will be change. Again threshold, there will be change. Right, and that is the output, guys. Right, now same story. Next time when it will cross the lower threshold, again there will be change. When it will cross the lower threshold, there will be change. Guys, this is the waveform. This is the waveform. So my dear friend, when there are two levels, upper threshold and lower threshold, and we are changing the voltage at what? Inverting terminal, that is the sinusoidal waveform. First it is what? Plus V set. Output is plus V set, that's why it is the upper threshold level. Zero input, positive maintained. Now when we are increasing the inverting terminal voltage at this point, inverting terminal is greater than non-inverting terminal, and that's why the output switch from plus V set to minus V set. It will increase up to that same condition, and then when it will decrease up to what? Lower threshold, output will switch from minus V set to plus V set. Then again when it will increases and it will cross the upper threshold, output will switch from plus V set to minus V set, and continuously that. There are two levels, guys, upper threshold and what? Lower threshold. And there should be what? Increasing journey as well as decreasing journey. During increasing journey, now what is the conclusion? During the increasing journey, when input cross upper threshold level, output will switch from plus V set to what? Minus V set. During increasing journey, when input cross the upper threshold, output switch from plus V set to minus V set. During decreasing journey, this is the decreasing journey, when input cross lower threshold, output switch from minus V set to what? Plus V set. So there is a two level. At the same time we want input should increase and decrease, as well as it should cross what? Upper threshold and lower threshold. Otherwise there will be no change. So basically it is a square wave converter. Squaring circuit. Why squaring circuit? Because it will convert the sinusoidal waveform into square wave. If you have any doubts, then write in comments box. These are the important points, guys. This sinusoidal waveform is converted into a square wave because of these two levels. Now finally transfer curve. Finally the transfer curve, guys. Now watch this transfer curve. Right. So I will give you the two methods how to draw the transfer curve. Then first method, then transfer curve means V0 versus Vi, and again we are going to get the hysteresis loop here. Hysteresis loop here. Okay. Now, what is the transfer curve means? First of all, right. Now, this is the Vi on x-axis and V0 on the y-axis. Then this is a upper threshold level. Put the value. This is the Vi on x-axis, positive value, negative value, and this is the V0. And this is the lower threshold. LT means lower threshold, UT means upper threshold. Then remember, very simple, with the diagram you can draw. First of all, if the input is highly negative, for example minus 10, so if the highly negative terminal is highly negative, means definitely it is less than what? Positive terminal. By positive terminal may be lower threshold -3, maybe upper threshold +3. So what is the input? -10, and that's why negative terminal is less than the positive terminal. When the negative is less than positive or positive is greater than negative, what is the initial output? Plus V set. For example, you are going to start with this. It is a plus V set or -5, sorry, because we have
minus 5, and this is what, minus 3. Then initially the output is plus V set. Okay. If the output is plus V set, what is the level at 3? Upper threshold. Or when the input will cross the 3, then there will be the change to increase the input. First of all, it will cross the minus 3, no change. When it will cross the plus 3 input, this is the input journey, then there will be the change. Now up to this point, output maintained a constant level. This is a constant level. When the input increases, output maintained. When the input cross the upper threshold level, output will change from plus V set to minus V set. Now the input increases up to what, plus 5, no change. It will maintain what, minus V set. This is called increasing journey. This is called what, increasing journey. So it is input switch from minus 5 to plus 5. When it will switch from minus 5 to, first of all, it will cross the lower threshold, no change. When it will cross the upper threshold, there will be change. To watch this diagram. This is the increasing journey. When the input switch from minus 5 to plus 5, minus 5 to plus 5, what is the output? Plus V set. When it will cross lower threshold, no change. When it will cross upper threshold, there is a change from plus V set to what? Minus V set. And when it reach up to what? Plus 5, it will remain at what? Minus V set. From this point to this point, from plus V set to minus V set, this curve, this portion. I have given this answer. Okay. Then, when we are decreasing it, when we are decreasing the input from plus 5 to what? Minus 5. Then what will happen when it is a highly positive? For example, it is highly positive. So negative terminal is greater than positive terminal. When negative is greater than positive, what is the value? Minus V set. If it is minus V set, it is minus 3. Then when we are decreasing the input, it will cross the upper threshold, no change. When it will cross the lower threshold, there is a change in the output. Output will maintain the constant level. And when the input cross the lower threshold, minus 3, output will change from minus V set to what? Plus V set. And this is the minus 3. Now tell me, this is the minus 3. So we are getting this curve. And that is called what? Hysteresis loop. Hysteresis loop. And this is the loop in what? Transfer curve, V naught versus Vi. So this is a clockwise direction. Watch this. It is a clockwise direction. So you can also watch this. When we are decreasing from plus 5 to minus 5, what is at the plus 5? What is the value? Minus V set. When it will cross the upper threshold, right? No change. When it will cross the lower threshold, minus, then there is a change. That is what? Journey. So when we are moving from negative to positive, that is called increasing journey. And when we are moving from positive to negative, it is called decreasing journey. So we are moving like this and back like this. We are getting a loop, and that is called hysteresis loop. And then this difference is called what? Hysteresis voltage here. From this point to this point, it is called hysteresis voltage, VH. Upper threshold minus lower threshold. So what is the direction here? Clockwise direction. This is very simple question. So I think that is clear to you, everyone. Yes or no? So 30th morning 11. So stay tuned with us, because I am going to solve what number of questions on operational amplifier. Already I have taken one session on operational amplifier, then what second session again on what Schmitt trigger circuit. Then this is the again the third part, that is the hysteresis. So you will be able to solve some important numericals. So stay tuned with me, because I am going to solve questions on inverting op amp, non-inverting op amp, NAT, MSQ, MCQ, and what differential amplifier, voltage to current converter, current to voltage converter. How many students are interested? Please write in comments box, guys. हमें पता चलना चाहिए कि आपको क्या चीज required है. Okay, and that is the case. Easy question. So what is the question here? Watch this.
Now my dear friend, we are connecting the input at what? Inverting terminal. This is what? Ground. There is no reference voltage, 1 volt. In the operational amplifier circuit shown below, the input voltage is gradually increased from -10 to +10. Means gradually increase means what? It may be sinusoidal signal. It is increases from -10 to what? +10. Assuming that the output voltage saturate at -10 and +10. So what is the supply voltage? +10 and -10. V out will change from, right guys, change from. So already you have the idea where is the input will change from -10 to +10, -10 to +10, +10 to -10, +10 to -10, right? Then what are the threshold voltage? If you have the idea about the threshold voltage, you can quickly give the answer, yes sir, this is the point. So first of all, we will find the threshold voltage where the input will change. So first of all, always find the threshold voltage. So there are two levels, +10 and -10. There is no VR. Then it will become very easy. What is the upper threshold? Very, very easy. This is the R2. This is the R1. Then it will become R2 upon R1 plus R2 into what? V set. 1 upon 10. This is the 1 upon 9 plus 1, 10 into V set is 10. 1 volt. And what is the lower threshold will become minus R2 upon R1 plus R2 into V set. Because it is -10, it will become -1 by 10 into 10, that is the -1. Now you have the upper threshold and lower threshold. Then what is the transfer curve? Easily you can draw. This is the +1, this is the -1. When the input is highly negative, then what is the output? Plus V set. What is the plus V set? 10. Input will switch. When it will cross the upper threshold, output will change from plus to minus V set. Yes, this is the curve. Clockwise direction, right? Or during decreasing journey, when it decreases, input decreases from this point. When during decreasing journey input cross the -1, output switch from minus V set to plus V set, and you are getting the clockwise direction. Clockwise direction. So this is the case. So what is the answer here? -10 to +10 when the input is -1 volt. -10 to +10. -10 to +10 when input is -1 volt. Yes. But what is this? This is decreasing journey. Decreasing. Gradually decreases, but what is given here? Gradually increased. So you have to focus on what? Increasing journey. So what is the increasing journey? From -10 to +10. When the input is gradually increased from -10 to +10, watch this. Increases, output switch from +10 to -10 when the input is what? -1. Input is +1. Input is +1. When input cross the +1, output switch from +10 to what? -10. Now, gradually increase, the input switch from +10 to -10 when the input is +1. D is the answer. D is the answer for this question. तो देखिए पूरा systematic ढंग से first of all draw the transfer curve, then you will get the idea, right? So when the input increase from -10 to +10, always remember you can start with the -10. If it is highly negative, so there are two levels only, 1 or -1. My dear friend, -10 is less than 1 as well as less than -1. That's why initial output is +10. Initial output is plus V set. And if it is plus V set, what is the value? 1. Or when the input will increase and when it will reach to 1 volt, output will switch from +10 to what? -10. My dear friend, once you have the idea about this diagram, within 10 seconds you can get the answer for this question. No need to draw the transfer curve and so on. So answer for this question is D for Delhi. If you find any difficulty, any confusion, then please write it or write on the comments box, right? But get the command over this Schmitt trigger circuit, guys. So this is about the first diagram. Now second important diagram. Here the input is connected to what? Inverting terminal. Here the input is connected to inverting terminal, and remember this
What is the rotation? Clockwise. Clockwise rotation in hysteresis loop when the input is connected to inverting terminal. Now, second question. When the input is connected to a non-inverting terminal, then what will happen? For example, this question is given. With question you will get the idea. Shows a Schmitt trigger circuit and figure B corresponding hysteresis characteristics. Watch this. When the input is connected to a non-inverting terminal, this is the input connected to non-inverting terminal. Watch the rotation counterclockwise direction. When the input is connected to what inverting terminal, clockwise direction. When the input is connected to non-inverting terminal, counterclockwise direction. So this is a counterclockwise. Important thing. But you will get the idea how to draw the transfer curve and how to find the threshold voltages. So what is the question? Schmitt trigger circuit. The values of this is the TL means lower threshold, TH means upper threshold or high threshold level. What are the lower and upper threshold levels? Right? And the saturation voltage is given. This is the unit 10 volt minus 10 volt. Plus 10 volt minus 10 volt. This is the 10 kilo ohm, 5 kilo ohm resistors are connected here. Vi is connected here and V0 is here. In this diagram, how to find the threshold voltage? कैसे बताओगे? बताइए जरा. चलिए अब आते हैं, देखते हैं जरा इस डायग्राम में how to find the threshold voltage. Then, if you want to find the threshold voltage, then first of all, find the voltage at this point. That this is the R1, this is the R2, and this is the Vp, and this is the Vn. Here no doubt the Vn is 0, but otherwise, first of all find the voltage at the Vp and then equate it to what? Vn. It may be 1 volt, it may be minus 1 volt, it may be 0 volt. Equate it and you will get the two threshold level, one for plus 10 volt, one for minus 10 volt. So threshold voltage means the level when the input crosses those level, there is a change in the output. When the input crosses those level, there will be the change in the output. And when there will be the change? When this Vp will cross what? Vn. When the Vp crosses the Vn, one at increasing journey, one at decreasing journey. Always remember. When Vp increases, at particular time it will cross the Vn. When Vp increases at particular point, when it will cross the Vn, there will be what? Change in the output voltage, right? Then second thing, when the input decreases, again during decreasing journey, it will cross when the Vp decreases, it will again cross what? Vn at particular point, that there will be the change in the output. Then first here, when the Vp increases and it will cross the Vn, means definitely Vp is what? Initially Vp is less than Vn. And that's why the output is initially what? Minus Vset. Or when the Vp increases and when Vp just slightly greater than Vn, the output is switched from what? Minus Vset to plus Vset. Very simple logic. Minus Vset to what? Plus Vset. Are you getting my point? Means initially Vp is less than Vn and that's why the output is minus Vset. Vp increases and when Vp increases, when Vp cross the Vn, output is switched from minus Vset to plus Vset. Similarly, when we are saying that it decreases, means what? Initially what? Vp is greater than Vn. Means what is the output? Plus Vset. Output is initially plus Vset. When initially the output is plus Vset, Vp is greater than Vn. Now when Vp decreases, then finally at point when Vp is less than or equal to Vn, output will switch from plus Vset to what? Minus Vset. Positive terminal is less than negative terminal, minus Vset. So this is called transition. Now you will ask, sir, but why Vp will change? My dear friend, this time Vp will change because Vp depends upon what? Vi. Vp depends upon Vi, and you have to find the Vp in terms of Vi, and then you have to equate when it is increasing, when it is decreasing. In both the cases you have to equate with what? Vn, and you will get the two level of input for which
there will be change in the output. What is the threshold level? When the input crosses those level, there will be change in the output. At the end, I will give the shortcut, very easy question, but I am giving you the method, guys, first of all. Then watch this diagram, very simple. Find the VP, this is the VN, VP. How you can find? Write down the KCL, VP minus VI upon R1, R2, this is R1, VP minus VI upon R2 plus VP minus V0 upon R1 is equal to 0. Solve it, you will get the VP R2 upon R1 plus R2 into V0, R2 upon R1 plus R2 into V0 plus R1 upon R1 plus R2 into what? VI. This is the VP. Oh, you can easily find. Write down the KCL, arrange it, and you will get the VP in terms of what? V0 and VI. Or directly you can write R2 upon R1 plus R2 into V0 plus R1 upon R1 plus R2 into what? VI. Then this VP, equate it to what? VI. Equate it to what? VI. VN. For example, here the VN is what? 0. Equate it to what? 0. And then find the what is the value of the VI in terms of what? V0. You will get VI is equal to R1 plus R2. R1 plus R2 is common, cancel out. And VI will become minus of V0 R2 minus of R2 by R1 into V0. Check this. Now V0 has the two level. V0 has the two level. One is plus Vset and one is minus Vset. You will get the two level of what? Vi. For plus Vset, Vi will become minus R2 by R1 into what? Plus Vset. And for minus Vset, Vi will become R2 by R1 into what? Vset. Vi means what? This is the value of Vi for which there will be the change in the output. So there it is a positive value, and that's why it is the upper threshold and this is the lower threshold. So very simple formula. So this is called lower threshold and this is called what? Upper threshold. Lower threshold and what? Upper threshold. So what is the R2 here? 5 divided by 10. This is the 5 divided by 10. This is the R1, that is the R2. So you will get the lower threshold is equal to 5 divided by 10 into what is the Vset? 10 minus 5 volt. What is the upper threshold? Again 5 divided by 10 into what? 10 minus it will become plus. That is what? 5 volt. So upper threshold is 5 volt, lower threshold is minus 5 volt. That is the answer for this question. Very simple. No. Silly mistakes. Minus 5 plus 5. Upper threshold and lower threshold, guys. So how to find the upper threshold and lower threshold? But directly you can use. Normally here in a crash course or in a short term course, teachers are what? They are directly giving the formula. Now please mug up this formula. If this is the question, use it and directly you will get the answer. At the end I am also giving the answer. I am also giving the formula. दे रहा हूँ ना लास्ट में आपको. लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दे और आपको पता नहीं है कि ये कैसे आया है, तो आप ये 2 नंबर का क्वेश्चन गलत कर दोगे. और आजकल क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, राइट. सिमिट ट्रिगर सर्किट पे ये तो पहले ही आ चुका है. इस पे अब क्या देगा? जैसे लास्ट ईयर आपका CMRR पे आया था, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो पे. जिसको पूरा डिटेल मालूम है वो बना लेगा, जिसने रट लिया है वो फिर दिक्कत है. तो यहां पर देखो क्या करना है, पहले वीपी को निकालना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वीआई एंड वी नॉट, और वीपी को इक्वेट करना है वीएन से. अब यहां पर वीएन 0 है, वीएन मींस नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज ग्राउंडेड है करके ये स्टैंडर्ड आंसर आ रहा है. अगर ग्राउंडेड नहीं है, 1 वोल्ट है या 2 वोल्ट है, तब क्या करोगे? तो जो भी आपने निकाला है वीपी, उसको 1 वोल्ट या 2 वोल्ट से इक्वेट कर दो एंड देन गेट द वीआई इन टर्म्स ऑफ व्हाट? वीएन जो भी है 2 वोल्ट प्लस वी नॉट.
अब वी नॉट की दो वैल्यू रखो, एक प्लस वी सेट और एक माइनस वी सेट। अब प्लस वी सेट और माइनस वी सेट भी अलग अलग हो सकते हैं। पता चला यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ये भी चेक कर लेना, कोई जरूरी नहीं है 10 और -10 ही हो। Then put the value of V naught and you will get the two level. So higher level is called higher threshold, lower level is called lower threshold. So that is the method for this question, guys. That is the method for this particular question. बहुत ही important है. Now, once you have the upper threshold and lower threshold, what is the how to draw the transfer curve? Last point. Just 5 minutes. If you have any doubts, any queries, guys, write down in a comment box. Now, अपर थ्रेशोल्ड, लोअर थ्रेशोल्ड। तो चलिए एक बार सोचो जरा कैसे बनाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बस अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं और मैं इसको अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड पूरा मैं आपको बताता हूं पूरा कैसे कैसे ड्रॉ करना है, राइट, बिकॉज दिस ट्रांसफर कर्व इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, स्टे ट्यून्ड विद मी। अभी मैं आपको टाइम बता दूं, आप मेरे सेशन देखिएगा, ऑलरेडी 30th मीन्स आपके 30 अक्टूबर को दीपावली से एक दिन पहले आपकी 3 घंटे की क्लास है जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंटरेस्टेड है एक बार जरूर कमेंट्स में लिखिएगा यस सर आई एम इंटरेस्टेड, राइट। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चंस आपको 1 घंटा पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को बनाकर रख सको। आप एक बार कोशिश करो बनाने की कैसे बनता है, फिर मैं आपको क्लास में एक एक क्वेश्चन के बहुत डिटेल में चीजें बताऊंगा कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो ये अभी हम लोग में हमारे जो प्लेटफॉर्म है प्रेफ फंडा, राइट, प्रेफ फंडा पे आप आइए, गूगल प्ले स्टोर में जाइए अभी, या आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं अभी आपको बता दूं। और वहां पर एक कोर्स चल रहा है सुपर 5 की लाइव क्लासेस है प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, ओके। और 5 सब्जेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट 5 सब्जेक्ट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वो यहां पर कवर हो रहे हैं। अभी आपको लगता है इनमें से एक आध कोई सब्जेक्ट आपका हो गया, आपको नहीं करना है, तो आप यू कैन ऑल्सो गो फॉर व्हाट सुपर 4, लेकिन ये आपका एक कोर्स है क्योंकि लिमिटेड टाइम है नवंबर और दिसंबर, तो मैं आपको ये 5 सब्जेक्ट प्लस आइडिया दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कहां से आपको और पढ़ना है, ताकि आप इसमें टॉप रैंक अचीव कर सके। मैथ कैसे करना है, एप्टीट्यूड कैसे करना है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो वो बहुत ईजी है। तो यू कैन ज्वाइन इट फॉर दिस। लेकिन ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप मेरे साथ एसोसिएटेड हैं फॉर व्हाट नवंबर एंड दिसंबर। फिर आ रहा जनवरी में हमको रिवीजन कैसे करना है, चीजों को कैसे टैकल किया जाता है, एंड देन भाई जून में आपका क्या होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री भी है, तो आपको काफी समय मिलेगा। लेकिन आप यहां से अगर ट्यून्ड होते हो तो आपको बात समझ में आएगी। क्लासेस अभी रनिंग है, आप यू कैन ज्वाइन फॉर दैट, राइट, ओके। अब क्या क्या फीचर्स है ये मैं आपको बता दूं। लाइव सेशन है, रिकॉर्डिंग्स होगी आपको अवेलेबल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उसका साथ में बैठ के सॉल्यूशन बनाएंगे, वीडियो सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लाइक व्हाट मिलमैन हेल्प किया, सेड्रा एंड स्मिथ एनालॉग में, राइट, ईडीसी में, देन कंट्रोल में नागराज एंड गोपाल, ओके, उगाटा, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। देन गाइज आपको आ गया वैन वेल्केनबर्ग, साडिकू, सुधाकर एंड श्याम मोहन फॉर व्हाट नेटवर्क। तो वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, ये तो सब ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस गाइस। आपको ना डाउट्स रहते हैं, यस नो मे बी, कि यार सही है या गलत है। अभी अभी हमारे टेलीग्राम में एक ने डाउट पूछा, किसी ने जवाब दे दिया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप उनको सॉल्यूशन मत दो, क्या दो, हिंट प्रोवाइड करो। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन दोगे तो वो कभी भी स्टूडेंट सीख नहीं पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड हिम व्हाट, हिंट। आप सॉल्यूशन देके उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप उसको और भी क्या कर रहे हो, आप उसके टैलेंट को ही खत्म कर दे रहे हो। तो हिंट कीजिए। और फिर तो ये आपका डाउट क्लियरिंग सेशन। डाउट क्लियरिंग का भी एक तरीका होता है कैसे लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे क्वेश्चन दिया और मैं हीरो बन रहा हूं, मैंने तुरंत बता दिया आपको डाउट। अरे मैं तो बता ही दूंगा, 20 साल से पढ़ा रहा हूं तो मैं बता ही दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एग्जाम आपको निकालना है, तो एग्जाम जब आपको निकालना है तो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए ना, तो आपको हिंट देना है, आपको तरीका बताना है कि कैसे बनाओ। फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, दूसरे या तीसरी बार में निकलेगा तो ही आप एग्जाम हॉल में बना पाओगे। लेकिन आप तो उससे खुश हो जाते हो जो जादू दिखाता है। जैसे आपको क्वेश्चन देगा, बता दो सर, जल्दी से बता दो, वो तो बता ही रहेगा इधर से उधर सेट करके, ठीक है। ये देखिएगा। देन इसके साथ साथ ये जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स को ना, सर मुझे मेरे पास टाइम कम है, जैसे कल ही कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है,
सर मुझे एनालॉग करना है या नेटवर्क करना है, तो यस यू कैन ज्वाइन, लेकिन आप देखो यहाँ पर कहीं कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, जैसे एनालॉग है, नेटवर्क है, यू कैन ज्वाइन। इसकी फी स्ट्रक्चर के बारे में आप पता कर सकते हो, राइट। तो आपको सुपर 5 और सुपर 4 करोगे तो फुल गाइडेंस आपको मिलेगा अप टू व्हाट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। ये आपका सब्जेक्ट वाइज आप कर लीजिए, नो डाउट अच्छे से होगा, डिटेल में होगा। आप एक बार ज्वाइन कीजिए और एक डिटेल में आप सब्जेक्ट को करने की हैबिट डालिए, क्विक आपका रिवीजन होगा और आपको क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस होगी। ओके, तो ये था। और देखो अभी दिवाली गेट है, लेकिन इट इज व्हाट स्कॉलरशिप अप टू 70%। आपको इसके लिए हमको कॉल करना होगा फॉर डिटेल्स, राइट। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या एसएमएस कीजिए, राइट। और किस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो आप वहां पर बात कर सकते हैं हमारे टीम मेंबर से। सभी सब्जेक्ट्स मैं लेने वाला हूं खुद ही। देन अब आते जरा वापस आ जाओ हिस्टेरिसिस वाले में। ये तो हुआ कोर्स के बारे में। देन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नंबर ऑफ क्वेश्चन है गाइस अलग अलग। अभी हम लोग डील कर रहे हैं श्मिट ट्रिगर सर्किट पर। देखिए जरा, अगर आपको दे दिया जाए डायग्राम तो फिर आप ट्रांसफर कर कैसे बनाओगे, राइट। कभी भी आपको दिया हुआ है तो ट्रांसफर करो। एक बार जब आपके पास अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में आ गया +5 एंड -5, -5। अब याद रखिए इनपुट किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अगर आप इसको हाईली नेगेटिव रखोगे, हाईली नेगेटिव फॉर एग्जांपल -10, तो डेफिनेटली यहां भी नेगेटिव होगा और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कम होगा। भाई इनपुट नेगेटिव है तो वीपी भी नेगेटिव, और इन्वर्टिंग टर्मिनल से कम होगा। जब इन्वर्टिंग टर्मिनल से कम है मतलब आउटपुट इनिशियली क्या है, -Vset। ये देखो ये इनपुट है ना, एक्स एक्सिस पे इनपुट है, वाई एक्सिस पे आउटपुट है, तो -Vset। तो देखिए ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल लेस देन नेगेटिव टर्मिनल होगा, इसलिए इनिशियली आउटपुट क्या है, -Vset। अब ये अगर -Vset है, ये भी माइनस है, तो डेफिनेटली अब क्या करना होगा, जब आप इसको इंक्रीज करोगे, आप जब इसको इंक्रीज करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और जब ये अपर थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचेगा, कौन, वीआई, जब वीआई अपर थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचेगा तब ये वाला टर्मिनल इस नेगेटिव टर्मिनल को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो देखिए इसको इनपुट इंक्रीज करते जाओ, आउटपुट व्हेन इट विल स्विच टू व्हाट, अपर थ्रेशोल्ड लेवल, आउटपुट विल स्विच फ्रॉम -Vset to +Vset. Okay. Now, when the input is highly positive, it is positive, that's why it is positive. Positive is greater than negative, and output is what, +Vset. For example, it is 10. Output is +Vset. Now, when we are decreasing the input, it will cross the upper threshold, no change. When it will cross the lower threshold, output will switch from +Vset to what, -Vset. Now watch this curve, anti-clockwise direction, So for this we are getting the anti-clockwise direction, means for when the input is given to what, positive terminal, anti-clockwise direction. This is called hysteresis loop. And the difference between the upper threshold and lower threshold voltage is called hysteresis voltage, that is the 10 volt. 5 minus of -5, that is the 10 volt. Hysteresis voltage. PH. Upper threshold minus lower threshold, that is called hysteresis voltage. Any doubt up to this point? Any doubt? तो देखो कहीं भी कुछ रटना है इसमें, कुछ नहीं रटना है, बस आपको समझ के सिस्टमैटिक ढंग से क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है भाई। तो देख लीजिएगा, अब मैं आपको एकदम छोटे से हिंट कर देता हूं। याद रखिए दोस्तों, जैसे ये कर्व है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, आप थोड़ा सा कंट्रोल से इसको आप एसोसिएट कर दो तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, शॉर्टकट। When the input is given to negative terminal,
This is the basic diagram. Right. In a network, when we are moving in an anti-clockwise direction, what is the angle? Positive. So similarly, when the input is given to positive terminal, what is the rotation? Anti-clockwise direction. In this way, you can recall. When the input is connected to positive terminal, it is the anti-clockwise rotation. Because when there is anti-clockwise rotation, what is the angle? Positive. Similarly, when there is a clockwise rotation, what is the angle? Negative. So when the input is given to negative terminal, what is the hysteresis loop? Right, hysteresis loop, you will get what? Clockwise rotation, like this. Right, and that is the, so this is the difference. So in this way you can recall. So in these two diagrams are very, very important. So already I have discussed. So hope you have enjoyed the session, guys. So please join and subscribe the channel. So already I have given you the idea about the courses. That is the offer for you. And remember, guys, now this time IRMS, that is Indian Railway Management Service through Engineering Services exam. You will get sufficient time. जून में होने वाला है एग्जाम. अभी 7 महीने बचे हुए हैं. 7 months का कैसे यूज करना है, आई एम गोइंग टू टेक वन सेशन फॉर यू. कि पूरे 7 months में आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, गाइस. तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Thank you very much for attending the session. Like the session and share the link of this session. Thank you.